Director Sir, Sushil Sir, and Mr. Abhishek, all the respected faculty member, and my dear young brilliant minds. So it's a little difficult to be a last speaker after having so many great speakers, because expectation is very high at the last and energy gets little low. So anyway, I will try to meet your expectation, and I have been told from your faculty members to motivate you about entrepreneurship so that you can start your own venture. So first of all, I would like to begin just by asking, anyway, first of all, let's have a clap for yourself, because you have been listening for a very long time. So thanks for your patience and thanks for your energy. So let's have a huge clap for yourself. No, actually, आप अपने से ही खुश नहीं हो लग रहा. नहीं, ऐसा लग भाई, अपनी तो तारीफ अच्छे से करनी चाहिए ना. तो फिर प्लीज अगेन लेट्स हैव अ क्लैप फॉर योरसेल्फ. या अब थोड़ा मजा आया. So let's begin just by asking this question from yourself, because it's a startup enclave. So I think ये क्वेश्चन तो बनता है कि how many of you are planning to start something your own, your venture, or something small or big in future? Please raise your hand. Please. आप में से कितने लोगों ने कुछ तो प्लान किया है कि हमें फ्यूचर में कुछ अपना करना? You are sitting in startup enclave, so at least उसकी इज्जत रखो आप. कितने लोगों ने प्लान किया है कि कुछ तो फ्यूचर में हमें अपना करना है, कुछ अपना एंटरप्रेन्योर, अब अपनी कुछ कंपनी एस्टैब्लिश करनी है? प्लीज रेज योर हैंड. थोड़ा सा सोच लीजिए, फिर से रेज कर सकते हैं. वेरी फ्यू पीपल. सो आई होप दैट मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड. एंड so before motivating you yourself, before motivating to you, एक्चुअली उसके लिए पहले इंस्पायर होना बहुत जरूरी है. देखिए, जब तक आप प्यासे नहीं रहोगे तो पानी पीने का मजा नहीं आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी इंस्पायर फर्स्ट एंड देन आई कैन मोटिवेट यू. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग, एनी वे इट गॉट फेल? दो यू आर अ स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड दैट यू haven't started anything, but at least some YouTube channel or some small business or something. Okay, good. Could you please let me know what did you start? Yeah, good afternoon. Just wait, mic is going. Thank you for giving me this opportunity. My name is Sahiluddin. I started my own glass industry with two of my brothers, Mr. Mayank and Mr. Surya. It currently been registered, all been registered since been done, and few of the employees and all the interns are working under all three of them. We have our chair members and all the faculty, all the board members and the directors aligned, and we are currently working on it. The website is almost complete, and let's see. Okay, great. Congrats and all the best. Yeah. Anyone else? So if I ask how many of you have planned something to start something your own, and when I just ask that did you start something, or any one of you, so there is a gap. पहले कुछ तो हाथ उठे थे, बट बाद में केवल एक हाथ उठे. तो बेसिकली व्हाट इज why this is the gap? Actually it happens always. जब हम कुछ प्लान तो हम बहुत करते हैं, बट उसको एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचा पाते हैं. इवन इफ आई आस्क आफ्टर 5 years, एंड नॉट ओनली इन दिस रूम, इफ आई आस्क टू एनी अदर ग्रुप, द सेम थिंग विल हैपन, कि वी हैव अ प्लान but we don't execute. So today I will just cover these 3-4 points. What are the some quality you should acquire so that at least you can start something your own, you can start your own venture just by giving some example of mine, my story. How did I start? Because I know better than I know
myself better than anyone else, so that I can motivate you, I can inspire you, so that you can also start something your own. So as you know, I'm running a STEM Robo. I'm a founder and director of STEM Robo Technologies Private Limited, and apart from STEM Robo, I'm also a founder of 5 more companies in field of 3D printer, online coding platform, and one online platform for higher education, then one software company, and then finally successfully I am running this STEM Robo Technologies Private Limited. So in STEM Robo, actually we are creating a complete ecosystem for innovation in schools and colleges, where we are manufacturing and developing a complete content around our DIY kit, do it yourself kit for robotics, artificial intelligence, AR, VR. So you know, and artificial intelligence too, and you know these words has become the buzzword these days as per introducing this new education policy 2020. So we are one of a leader in this domain, and I think if you search on the Google or if you ask to ChatGPT the top 5 companies in field of tinkering lab, establishing a tinkering lab, or artificial intelligence lab or robotics lab, so you will hear the name of STEM Robo. So today I'm not here to let you know or to say something about STEM Robo in more detail or about my venture. Today I'm here to discuss what are the triggering point which forced me, which motivated me to start my venture, so that you could be motivated to start your own venture too. So till 2012 I was in job. I come from a semiconductor background, chip designing field. I have worked in ST Microelectronics, and I have also worked along with Intel and some other chip designing based company. So no, obviously means when I used to sit in cubicles, so every time there was a thought that why I'm just doing this thing, why I'm always just writing a code, why I'm just designing this chip. No doubt this is a very exciting job for anyone, and at that time too it was a very good job for anyone and for me too, but I was not enjoying at that time. And when I used to sit in cubicle, there was always a question for me, what I am doing, what I am just doing for society. तो ये चीज बार बार ये थॉट दिमाग में आता था, एंड ट्रिगरिंग पॉइंट तब बना जब मैं एक्चुअली आई ऑलवेज यूज्ड टू विजिट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस US and Taiwan. So when last time when I visited to America in California, so ये थॉट हमारे दिमाग में हमेशा आता था कि भाई लोगों का तो ये एक सपना रहता है कि भाई अमेरिका जाओ, यहाँ पे कमाओ और यहाँ पे सेटल हो जाओ, बट इट वॉज नॉट वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली. वो एक जो एक्साइटिंग एक अंदर से जो एक फील आना चाहिए, दैट फील वॉज नॉट एक्साइटिंग मी कि भाई मैं यूएस में बैठा हूं, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में बैठा हूं, एंड आई एम नॉट गेटिंग मोटिवेटेड टू कंटिन्यू माय जॉब. तो मैंने सोचा यार कि जरूर कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ है. बाहर की ज्योमेट्री तो सही चल रही थी, बट अंदर की केमिस्ट्री में कुछ गड़बड़ था. तो देन आई थॉट कि आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ, एंड दिस इज अ फर्स्ट टेक अवे फॉर यू फॉर टुडे दिस माय लेक्चर और फॉर एनीवन एल्स, दैट कि फर्स्ट लिसन फ्रॉम योर हार्ट. आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है वो आप सुनो, एंड उसको आप इंप्लीमेंट करो. उसको सुन के यू कैन स्टार्ट डूइंग दोस, यू कैन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दोस थिंग्स. सो व्हेन आई जस्ट केम बैक टू इंडिया, I just resigned from my job 15th August. I got the freedom on 15th August 2012 from my job. And finally, so usually what happened, I was drawing a very good salary. You know, semiconductor domain में बहुत अच्छी salary रहती है, सब कुछ, everything was going fine. So once you share these thoughts, even it happens with anyone, your relatives, your parents. So what happened? They try to convince you कि नहीं भाई इतनी अच्छी सैलरी है, why are you leaving your job? So just what I did it one thing from I didn't share with anyone.
I just shared with my father. My father was a professor. Unfortunately, he is no more. So I just shared with him, and what he said, कि नहीं बेटा, whatever you want to do, you just do it. You leave your job. And 15th August, I left my job and started my first venture, Tevatron Technologies, in field of IoT and artificial intelligence. This was my first venture. This is another lesson which I want to give it to you, and which is very important. That is, don't take advice in a random way with anyone. This is a little bit blunt, but try to think about it. Usually what every people used to do it. आप तो MBA कर रहे हो आज के टाइम में, इवन यू टू और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स जब एडमिशन के समय जाते हैं, व्हाट दे यूज टू टेक एडवाइस फ्रॉम होम? योर नेबर्स विल डिसाइड कि आपको क्या लेना है. आपको MBA फाइनेंस लेना है या MBA HR मार्केटिंग लेना है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके नेबर्स डिसाइड करते हैं, मिश्रा जी, गुप्ता जी, अरोरा जी एंड अदर पर्सन, दे डिसाइड कि वेदर आपको मैकेनिकल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है या कंप्यूटर साइंस पढ़ना है. माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर यू. ओनली यू नो व्हाट यू हैव टू डू. नो वन कैन डिसाइड. भाई आपका आउटर लुक है, आप मैं वहां बैठा था, कैन यू जज माई सेल्फ? Can you judge me? Who am I? What we are doing? What my internal nature is? In a similar way, आपका neighbor कभी, आपके uncle, आपके actually the problem is the biggest enemies of anyone is their relatives, is their parents, is their friends, their surroundings. Sorry to say, I'm saying in a very positive way. आपकी भलाई करने के चक्कर में वो आपकी बुराई करते हैं. So next time, whenever you have a very good thought to do something, not only for entrepreneurship, anything, whatever you, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, maybe by end of the day, if you get fail, it will be your responsibility. You can't say, I did a preparation for IAS exam, okay, in 2001. और सिर्फ इसलिए किया कि अगले 25 सालों तक मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगा कि यार मैंने प्रिपरेशन किया होता तो मैं IAS ऑफिसर बन जाता. नाउ आई एम एंटरप्रेन्योर. मैं IAS नहीं बन पाया, ड्यू टू वॉट एवर रीजन, बट इट्स माई ओनरशिप. इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अ डिसीजन कि भाई मुझे ये नहीं, अब ये करना है. तो दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. Don't take advice. See, I'm not saying थोड़ा सा maybe कुछ सीनियर्स, कुछ लोगों को ये बातें बुरी लग सकती हैं कि भाई ये बंदा ये कह रहा है कि don't take advice from anyone. No, see, आप एडवाइस लो. गुरु को भी जैसे गुरु अपने स्टूडेंट को पहचानता है, उसी तरीके से शिष्य भी डिसाइड करे कि हमारा गुरु कौन होगा. Every person can't become your guru. So you should have capability to decide who would be the guru for you. Maybe suppose कोई साइंटिस्ट है और आप उससे ये जानना चाह रहे हो कि मैं MBA फाइनेंस लूं या MBA HR लूं. Can he decide? आप कोई प्रोफेसर है और उससे आप, sorry to say, all the professors are sitting here. My purpose is not to just to say something else. Try to understand what I'm just trying to convey here. जो पर्सन जिस चीज के लिए एक्सपर्ट है उससे आप वो क्वेश्चन पूछो. अगर आपके फादर हैं, आप उनसे कोई एडवाइस लेने जा रहे हो and he is a not expert person, then how can he advise you कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. तो the thing is, don't take advice from anyone. Okay, so now by this way I started my venture, and gradually we were keep growing, ups and downs. It was coming on the way. Still we are struggle sometime growing very fast. By the God grace, this year we closed 100 crore revenue of STEM Robo, and we have become leader in this domain. So now the question is,
And another very shocking news. Actually, this is very important for everyone. क्योंकि जब आप रास्ते में चलते हो, बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. So how do you tackle this situation? So just I want to share one of my heart-touching story so that you could also be motivated कि कभी भी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आप एकदम गिरने वाले हो, बट यू कैन स्टैंड अप अगेन, से थैंक्स टू गॉड एंड देन अगेन स्टार्ट कंटिन्यूइंग योर जर्नी. When I just formed my company, first company, the day when I decided to have a puja ceremony, on the same day, it is little personal, but just to motivate you, I'm just sharing this thing. The same day, my father got expired. The same day when I decided to have a puja. Now just see, एक ऐसा person जो ये डिसाइड करता, आप भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा करते होगी कि हमें अपने फादर को ये चीज प्रूव करना है, हमें अपनी मदर को ये चीज प्रूव करना है, एंड वो पर्सन ना रहे, तो देन द थिंग, what kind of situation will happen? I took it as a challenge, and what I did it कि okay, ठीक है, ये जो भी हुआ, it's a blessing of my father. Wherever he is, I will be blessed, and I just continued my journey. And now I'm here what I am. So now this is another thing is which I wanted to share कि कभी भी किसी भी कंडीशन में don't let you down. So now at the last, just I would like to ask you, what are the qualities which you think that these 2-3 qualities should be required or mandatory to become an entrepreneur, or you can say successful entrepreneur? Can anybody of you? What are the primary qualities which you think कि ये चीज 2-3 चीजें तो रहनी ही रहनी चाहिए? Even any faculty members, if you are also welcome. Anybody of you? Yeah, please. Risk taking. Yeah, good. Discipline. Anyone of you? Anyone else? What? Resilience. Good. Okay, fine. So these all qualities are very much required. Actually, see, अगर आप जो की होता है, जो लॉक को ओपन करते हैं, उसमें बहुत सारे एजेस होते हैं. एक कोई लंबा एज होता है, कोई डीपर होता है, कोई छोटा होता है. जब ऐसे जो की बनता है, जो फ्रंट जो की का जो फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है, तो जो सारे एजेस होते हैं ऐसे. So these all things, these all parameters are the key of the success. और वो parameters क्या है? तो जो सबसे डीपर जो एज है उस की का, that is the passion, जुनून. एक दिमागी कीड़ा होना चाहिए कि I have to do something. You don't know what you have to do. बट अगर ये पता है कि I have to do something, वो something वाली चीजें, वो जब कीड़ा आ जाएगा, दोनों, देन वो कीड़ा कब थॉट के थ्रू प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, आपके वेंचर में चेंज हो जाएगा, यू डोंट नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली पता है, जो पैशन है ना, वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे यार बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, स्टूडियस होंगे, टॉपर होंगे, बट दे डोंट हैव अ पैशन. So passion is very much required. Once you walk on the way, once you talk to the people, passion, your body language should reflect the passion. So सबसे पहले वो passion होना चाहिए, जुनून होना चाहिए. This is very much required. Another quality which I think for to become an entrepreneur, identifying the problem. Actually, these days, what is going on when I just used to meet engineering college students or some
young innovators. I'm also the part of some committee of the IIIT Delhi, where we used to invest young entrepreneurs. So what I used to identify, they are doing they are inventing something just for sake of doing something. And this is the main problem exists for the technical people, कि कुछ टेक्निकल है, जैसे AI की बात हो रही है, AI में कुछ करना है भाई. If you are not going to solve any problems, some society problem, as sir said, Binod sir, what he said, कि आप जब तक अपने बारे में सोचोगे तब तक चीजें नहीं होगी. Once you start giving something to the society, once you start thinking for the society, then automatically that product, you can solve the problem. Okay, you can identify the problem. And design thinking भी आप लोग पढ़ते होंगे. Design thinking का भी जो पहला स्टेप है, what is this? Identify the problem. भाई एक बार बोलो तो, identify the problem. So once you identify the problem, and there are several points. Being in India, अगर आप इंडिया में हो तो आप प्रॉब्लम से घिरे हो, ठीक है? ट्रैफिक प्रॉब्लम, water problem. Okay, everywhere you are surrounded with problem, and if you take it in a positive way, you will find a solution to solve that problem. And once you actually the biggest problem in this world is how to identify the problem. And once you are able to identify the problem, then you can find the point, what kind of venture you want to start. So this is the second thing, identify the problem. And third, which is the very, very basic, and that is the very, it's a little philosophical, but it's true, and that is the faith and belief system. There is a very minute difference between faith and belief. Just I'm going to narrate one story and then we'll finish my talk. And that is एक बार क्या हुआ नियाग्रा फॉल्स में. It's a true story. I have heard somewhere. जो रोप पे लोग साइकिल चलाते हैं, आई थिंक आपने भी देखा होगा, दो बैम्बूज के बीच में बांध के और उस पे रोप स्टिक लेके रोप पे साइकिल चलाते हैं. तो नियाग्रा फॉल पे क्या हुआ, वहाँ पे ऐसे एक इवेंट चल रहा था. तो वहाँ पे कोई नियाग्रा फॉल पे एक तरफ से और दूसरे कॉर्नर पे रोप बांध के और उस पे एक बंदा साइकिल चला रहा था. देयर वर मेनी विजिटर्स, दे वर जस्ट सीइंग दिस इवेंट. वो 2-3 बार गया बंदा, साइकिल चलाया, फिर उस पे अपने फिर कलीग को बिठाया, फिर बीच में अपनी साइकिल खड़ा करके फिर उस पे कुछ सैंडविच वगैरह भी खाने लगा, जस्ट टू शो द कॉन्फिडेंस टू द ऑडियंस कि देखो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स. देन ही आस्क्ड टू द ऑडियंस कि भाई यू हैव सीन एवरीथिंग, I am capable to ride the bicycle on this rope. Everybody was clapping, हाँ you can do it. तो कई बार पूछा कि are you okay, कि भाई ये तो आप लोग भी बोलते कि हाँ you can ride a bicycle, you can really doing well. Then at the last what he asked, okay you are confident कि I can ride the bicycle, you can even see that I'm just riding it here on the rope on the top of the Niagara Falls. So how many of you or anybody of you can come along with me to sit my bicycle? What do you think? लोगों ने क्या बोला होगा? No. Actually this is the difference between faith and belief. Everybody was having a faith on that person just to see the things कि वो बंदा बाइसिकल चला रहा है नियाग्रा फॉल्स के ऊपर, but no one has a belief. अभी भी उनको डाउट था. And वो फिर बेसिकली जो फेथ है वो दिल से आता है और जो बिलीफ है वो मेंटल एक्सेप्टेंस होती है. तो even not only for entrepreneurship, for anything whatever you are going to achieve in your life, faith and belief, these are the two wheels of the chariot.
रथ के दो पहिए हैं, अगर फेथ नहीं है, अगर फेथ नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, और बिलीफ नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, फेथ एंड बिलीफ, भगवान में हम श्रद्धा रखते हैं, फेथ की हिंदी श्रद्धा है, हम फेथ रखते हैं बट अगेन लॉजिक लगाने लगते हैं, नहीं यार ये चीज नहीं होगी, क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव अ बिलीफ। योर बिलीफ सिस्टम शुड बी वेरी मच एट अ वेरी हाई लेवल। So thank you, thanks for inviting me here, and thanks for listening me very patiently and carefully. Thank you everyone.